Good morning, team. Central Board Chairman Nitin Gupta has said income tax and corporate tax collection for FY22 was 14,09,000 crore, which was a record high. But if you take the collections till now, on Tuesday he made this statement. Year till date, FY23 collection is far higher at 23%. It is 7,04,000 crores. So by the year end, we will cross 14 lakh crores is what he is saying by 20-25%, which is very good. SBI cards will be in focus as RBI data points credit card spending. It is not credit card number of credit card. It is credit card spending in the month of August was higher by 35%. Now, SBI cards came with one scheme, that is where it has gone. We like this stock. I think if you are looking at 8 to 10% return, SBI cards is one thing where once nearing the results, it could give you that. So for 45 days or 60 days, SBI cards is a stock to watch out for. Swedish defense manufacturing Saab to produce Carl Gusfang M4 weapon system in India. Additional details have not been shared, but it is very important. And keeping what is happening in Russia and Ukraine, now Sweden wants to manufacture in India, and they want to export also from India. So this is something positive for India as a whole. But more details are not available at this point of time. PSU has a target to spend in capex. This year 6,62,000 crores in FY23, while till August they have spent 2,30,000 crores. The spend is about 34% higher. But by December, government wants this PSU to spend almost 90%. Very interesting. But more the capex spend happens, it kickstarts the economy in a very big way. Torrent Pharma has acquired Curito Healthcare, which has strong presence in dermatology segment with 50 brand, and Torrent Pharma is buying this for 2,000 crores. And I think this is something positive for Torrent Pharma. With global markets correcting today, there can be some panic opening. So if 16,700, 16,800 is a level, then it will be a very good opportunity to buy. We need to understand on 30th we have RBI meet. On 29th, it is a derivative settlement. So post derivative settlement, I don't think a selling will continue. By 10th of next month, the result season will start to flow. So whatever happening globally, this will not impact us, and result season will take over. And we need to buy stock where the revenue growth or the activity has been very high. Yesterday, Mr. Puneet Chatwal of Indian Hotels said that hotels is in a very big sweet spot. The spending is something we have never seen in the lifetime. So I think hotels as a sector is going to do good. We like Indian Hotel, Mahindra Holiday Resorts, Lemon Tree, Chalet, and East India Hotel also. In QSR, as festival season is nearing, in QSR, Jubilant Food, Devyani, Barbecue Nation are few things we like. Chemical companies also, there has been very good export numbers. And even Gujarat Alkali Chemical has completed one more expansion plans. I think around 800 rupees, it is worth buying it. By December, January, I expect the stock to give at least 10 to 15% return. And retail segment, stocks like Trend, Westside, Trend, DMart, Titan are few things, even Kalyan Jewellers. These are few stocks in retail segment which looks very good. And once the correction is over, banking will start to recover as the credit growth numbers are very good.
Now, I was reading a report on gold finance where they have said teaser loan rates have been removed. No, so the interest rate are rising for lending. So that is positive even for Muthoot and Manappuram, which has been correcting for a very long time. Now, and defense related stock has done very well. Now, irrespective of market correction, I think Cochin Shipyard, Mazgon Dock, GRSE, shipbuilders are in focus. Now, other companies have seen profit booking. So, we like Cochin Shipyard and Mazgon Dock at current level. Mahindra CIE, Mahindra has reduced stake from 11% to 9%. CIE is a European MNC company. So, I think, Mahindra wants to exit all non-core asset where they don't run the operation. It is positive for Mahindra and Mahindra. Alicon Cast Alloy, they in a management meet, they have said that JLR order size of almost 1,200 crores, which is big. And the supplies will be ramped up from FY25. So this is one stock, which looks very good. There are few companies, which looks interesting in this bad time or a corrective time. Asian Paints, Kajaria Ceramic, in hospitals, Kim's Krishna Institute of Technology, Liberty Shoes, Diamond Snacks. It is something related with snacking. Now VBL, Varun Beverages, and Blue Dart. These are few companies which are looking interesting. So any correction would be an opportunity. I don't expect the correction to last very long. Our local funds are very heavy. So I think after RBI policy, market would recover. Maybe 1 or 2 days of this bad time will continue, but it is a good opportunity to buy in a bad time. Even Bharti Airtel is one more stock to notice. With that, over to you, Sidhija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी एक कॉल को एक बार हम लोग हिंदी में कर लेते हैं. तो फर्स्ट हम लोग स्टॉक के ऊपर देखते हैं. तो हम लोग को लग रहा है कि जो पुनीत गोयल सर है, इंडियन होटल के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि होटल जो इंडस्ट्री और होटल जो सेक्टर है बेसिकली अभी अच्छा चल रहा है, गुड स्पॉट है, लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो अभी तक की हाईएस्ट है. तो आप होटल सेक्टर एक देख सकते हो. तो होटल सेगमेंट में हमें इंडियन होटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट, शैले होटल, लेमन ट्री, ईस्ट इंडिया होटल अच्छे लग रहे हैं. इसके अलावा जो क्रियासार सेगमेंट है, जो अभी दिवाली और ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है. तो उसमें क्रियासार सेगमेंट में जुबिलियन फूड है, बारबेक्यू नेशन है, देवयानी है, ऐसे स्टॉक के ऊपर आप देख सकते हो. इसके अलावा जो केमिकल सेगमेंट है उसमें एक्सपोर्ट काफी अच्छा हुआ है, जो नंबर है वो काफी अच्छे है. तो आप केमिकल्स जो सेक्टर है उसमें भी ध्यान से देख सकते हो. गुजरात अल्कली एक स्टॉक है, उन्होंने अभी एक कंप्लीट किया है उनका जो एक्सपेंशन था. तो ये स्टॉक के ऊपर हम लोग 8 to 10% रैली देख सकते हैं यहाँ से. देन उसके बाद जो रिटेल है, और रिटेल सेगमेंट में उसमें ट्रेंड है, वेस्ट लाइफ है. फेस्टिवल सीजन के अनुसार ये स्टॉक आपको मूव होते हुए देखेंगे. डीमार्ट है, उसमें टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है. करेक्शन आएगा तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है. तो आप ये स्टॉक के ऊपर ध्यान देख सकते हो. जैसे ही मार्केट में करेक्शन खत्म होगा, वैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आप थोड़ा बहुत रिकवरी देखना स्टार्ट करोगे. तो एक बैंकिंग सेक्टर भी फोकस में रहेगा. नेक्स्ट स्टॉक है कि जो मतलब डिफेंस सेगमेंट में जो कोचिन मतलब जो शिप बिल्डिंग है, उसमें कोचिन शिपयार्ड हमें अच्छा लगता है. माझगांव डॉक है, GRSE है. ये स्टॉक करंट लेवल पे काफी अच्छे है, तो ये स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा. उसके अलावा जो डेटा आया था गोल्ड लोन का रिपोर्ट, उसमें जो ट्रेजर लोन रेट है वो रिमूव कर दिया है. तो ये पॉजिटिव रहेगा मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम के लिए. महिंद्रा CIE का जो मतलब महिंद्रा का जो है, उन्होंने जो महिंद्रा CIE का जो स्टेक था वो ये किया है, रिमूव किया है. तो यूरोपियन कंपनी है ये. तो ये पॉजिटिव रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए. ये ग्लोबल मार्केट अभी वजह से आज का जो मॉर्निंग में जो ओपनिंग होगा वो पैनिक हो सकता है, बट 16,800 और 16,700 के यहाँ तक ओपन हो सकता है. तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत आ सकती है. तो आपको करेक्शन में बाइंग स्टॉक करने चाहिए.
तो उसमें एशियन पेंट है, हम लोग को अच्छा लग रहा है, कजारिया सिरामिक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किम्स है, कृष्णा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट साइंस, लिबर्टी शू है, डायमंड स्नैक्स है जो स्नैक्स रिलेटेड कंपनीज है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, ब्लू डार्ट है, ये स्टॉक हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी करेक्शन में बाय करने के लिए। और इसके अलावा लोकल फंड जो है वो अभी हेवी है ये मार्केट में, तो एक दो दिन हम लोग बैड टाइम दे सकते हैं, कंटिन्यू मतलब होगा थोड़ा बहुत करेक्शन, बट हम लोग को लग रहा है कि आरबीआई की जो पॉलिसी वो 30 सितंबर को है और थर्सडे को 29 सितंबर को मंथली एक्सपायरी है, डेरिवेटिव सेटलमेंट है, तो उसके बाद हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट सेटल होकर उसमें बाइंग मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, तो ये एक दो दिन थोड़े क्रूशल रहेंगे, उसके बाद बाइंग मोमेंटम आएगा टिल नेक्स्ट मंथ की जो दिवाली है उसके 10 तारीख तक हम लोग को लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और बाइंग आएगी। तो भारतीय एयरटेल भी एक स्टॉक है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है जो पीएसयू स्पेंडिंग है, कैपेक्स जो है उनका जो अभी तक का डेटा है टिल अगस्त तक उन्होंने 2,13,000 करोड़ स्पेंड किए, ऑलमोस्ट 34% हाइयर है, और वो अभी 90% स्पेंड करेंगे, तो ये कैपेक्स स्पेंडिंग अच्छा होगा तो इकोनॉमी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देन एसबीआई कार्ड, मतलब आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया, उसमें क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंडिंग है वो 35% हाइयर है, और एसबीआई ने एक कौन सी तो स्कीम ओपन की है, तो उसके लिए ये एसबीआई कार्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा, हम लोग एसबीआई कार्ड के ऊपर पॉजिटिव है, और यहाँ से हम लोग 8 to 10% रैली देख सकते हैं नेक्स्ट लाइक 3 or 6 months में। उसके नेक्स्ट अपडेट है सेंट्रल जो चेयरमैन है गुप्ता, उन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो कलेक्शन है अभी तक का हाईएस्ट है, 14,09,000 के अराउंड कुछ हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 23 का ये हायर है 23%। ईयर एंड तक उन्होंने अनुमान किया है कि वो क्रॉस करेंगे 14 लाख करोड़ के अराउंड कुछ, तो ये एक अच्छा है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। टोरेंट फार्मा है, उन्होंने अक्वायर किया है कल डर्मेटोलॉजी कंपनी है क्यूरेशिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और जो अक्वायर किया है वो 2000 करोड़ है। ये एक्विजिशन पॉजिटिव है टोरेंट फार्मा में, जो अभी ये एक्विजिशन होने के बाद जो फील्ड फोर्स रहेगा वो 1600 एमआरएस है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 1900 स्टॉकिस्ट होगा, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टोरेंट फार्मा के ऊपर। देन नेक्स्ट अपडेट है जो स्वीडिश डिफेंस मेजर है साबा, उन्होंने बोला कि वो सेटअप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन होगा कार्ल गुस्टाफ M4 वेपन सिस्टम, तो ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी आउटसाइड, मतलब स्वीडन के आउटसाइड ये कंपनी की, तो ये एक पॉजिटिव है डिफेंस सेगमेंट के हिसाब से। सो नेक्स्ट अपडेट है डोमिनोज के ऊपर। डोमिनोज जो है वो सेटअप करने वाला है मॉडर्न फूड प्लांट वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट 1 ईयर में, और उसका जो स्पेंडिंग है वो 100 करोड़ के अनुसार अराउंड है, और ये प्लांट सर्व करेगा 250 डोमिनोज स्टोर को ईस्टर्न रीजन में, और गवर्नमेंट ने ये पर्पस के लिए 13 एकर्स लैंड साउथ में अलॉट किया है, और 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में जुबिलेंट फूड को अलॉट किया है। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस है वो 767 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कल एक्साइड इंडस्ट्री ने भूमि पूजन जो सेरेमनी है वो की, वो जो उनका फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेंगलोर में उसकी, और ये इवेंट है फॉर्मल, उनका ये इवेंट होने के बाद उन्होंने फॉर्मल स्टार्ट जो है कंस्ट्रक्शन का वो स्टार्ट किया है, और ये इंडिया की फर्स्ट मल्टी गीगावाट आर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट है जो अराउंड 6,000 करोड़ है, और ये कंप्लीट होने में अराउंड 8 to 10 years लगेंगे। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 183 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जो वर्ल्ड का क्रूड स्टील आउटपुट है उसके ऊपर डेटा आया था, तो उसका जो क्रूड स्टील आउटपुट है वो फॉल हो चुका है 3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो अभी 151 मिलियन टन है, और राइज हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% हार्डली इन अगस्त मंथ में। ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है हम लोग विटनेस करें ये फॉल, प्रोडक्शन जो है पोस्ट मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करने के बाद। नेक्स्ट अपडेट है मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर। जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वर्क कर रहे हैं जो रोलिंग आउट पैन इंडिया सिंगल विंडो है क्लियरेंस सिस्टम का जो थिएटर्स के लिए, उसके ऊपर वो जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके अनुसार स्क्रीन काउंट है वो 2017 से लेके अभी तक का बहुत ही नीचे है, पहले 12,000 था तो अभी जाके 8,000 हुआ है,
जो शार्प मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे चाइना से, तो ये कॉन्ट्रास्ट है कि चाइना में जो काउंट है वो इंक्रीज हुआ है 10,000 से 17,000। तो अभी जो पोस्ट इम्प्लीमेंट जो ये पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो थिएटर्स ओपनिंग है वो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है, वो लीड करेंगी, और जो इंक्रीज है मतलब नंबर्स ऑफ थिएटर्स है वो इंक्रीज होंगे, और ये एक रिवाइवल रहेगा डिमांड से हिसाब से। और करंटली जो सबड्यू है बिकॉज ऑफ मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसके कारण भी, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा पीवीआर और आइनॉक्स जैसे कंपनीज के लिए। करंटली कंपनीज का मतलब पीवीआर और आइनॉक्स कंपनीज का प्लान है कि वो अराउंड 2000 स्क्रीन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ऐड करेंगे। तो दोनों स्टॉक पे करंटली मतलब पीवीआर पे हमारा बाय रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस है वो 2215 है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड आइनॉक्स के ऊपर होल्ड रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 600 एंड 650 65 लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है राउट मोबाइल के ऊपर। राउट मोबाइल ने रिवाइज रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया कल। तो कंपनी का जो अर्लियर गाइडेंस था ग्रोथ के ऊपर, तो 50% फाइनेंशियल ईयर 23 में गाइड किया था, बट वो अभी रिवाइज होकर 60% किया है। तो ये उनका जो CAGR है 51% था फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 23 तक। तो कंपनी ने बोला है कि इसके पीछे जो रीजन है रिवाइज करने के लिए, तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है उनको Q2 में, और जो उनको डील्स मिले उसके कारण, और वो Q2 जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर रहेगा, ये से उनको एक्सपेक्ट मतलब लग रहा है। और Q3 है उससे इवन ज्यादा बेटर होगा। तो कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है वो डबल होगा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो 52 बिलियन लास्ट ईयर था। और मार्जिन फ्रंट के ऊपर देखें तो कंपनी का एनी मटेरियल इम्पैक्ट मतलब जो है वो इतना कुछ नहीं आएगा, और इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट मतलब इंटेंसिटी है उसके कंपेयर करें तो। Q1 में इबिटा मार्जिन जो है वो 12% है, और ये ओवरऑल वेल है राउट मोबाइल के हिसाब से। फॉर्मल कवरेज ये स्टॉक के ऊपर हमारा कोई नहीं है। Technicals and derivatives a bit. Yesterday, if we see, the index had a very wild swings on both the ends. So it was basically in writer's day. Both the call buyers and put buyers were trapped, and in the end, eventually we closed on a flat foot, just hanging above the 17,000 level, just holding it. But if we see, then we had yesterday made witnessed 2 times test of 200 SMA, that is at 16,990, and if we see, then we are getting supports near that level. But today's opening, if we see, then SGX showing a 200-point gap down. So the next view will be opening near 16,800. So 16,750 to 800 is a zone of multiple supports. And if we break that zone, so there we can witness more fall up to 16,500. But if we defend that zone, then we can, if we defend that zone and move above 17,000, so that could be a short-term bounce in the index. On the sectoral front, if you see, then banking, financial and auto and metal and realty were weak over there, but oil and gas and IT and FMCG and media showed some strength. FMCG would be a defensive player, so we can see some strength, and IT is showing a bounce back over there. So these are the two sectors over. And the bank nifty front, if you see, then bank nifty also traded for the 5th consecutive day and lower low. It break the support of 38,500, which was a crucial. Now 37,900 and 38,000 would be an ideal support zone, and if that is also taken away, then we can witness another 1,000 to 1,500 points of fall from over there. So bank nifty is technically is on a weaker side, and we should avoid longs over there, and we should follow strict stop loss and avoid bottom fishing over there. On the options front, if we see in the bank nifty, also put writing is seen heavily at 38,000, and while the call writing is seen on 38,500 levels. Similarly, in the nifty, if we see, then writing is done on in the put side is done on 16,900 to 16,600, and while on the call side, if we see, then 17,100, 17,200, 17,300 strikes are having a major call writer. So that would be a hurdle clearing over there. So on the PCR, if we see, then there was no change. It is at 0.70 only PCR. And on the futures, if we see, then we had there was a long liquidation in the index by the tune of 1.73%. So, and the advanced decline ratio was positive with 119 stocks on the gaining side and 78 stocks on the losing side. Similarly, in the bank nifty also, there was fresh short built up in the index by 5%. So 135,000 shares were added in that. And in the low rollover front, if we see, then the nifty has a low rollover. On the second day compared to 49% in the last expiry, we had 39%, while on the bank nifty has is on the same lines. It is 41% at 41%. So that's it from mine. I'll hand over to
Bhavesh sir for more updates. Thank you. Hi, good morning, team. So, few updates starting with world steel production. So, world steel production fell by 3% YOY in the month of August to 151 million ton. So, this is the third consecutive month where we are seeing a fall, and this is mainly because of lower production from China. Secondly, Exide has started manufacturing its lithium-ion facility in Bangalore, which will take another 2.5 years to complete, and investment is 6,000 crores. So this is its first major steps. It had already announced this, but now it has started the commencement of construction. So positive, we are positive for on Exide with a target price of 183. Thirdly, on Jubilant Food, so Domino's will set up a modern food plant in West Bengal in the next 1 year, and it will spend 100 crores for it. This plant will serve 250 Domino's stores, which are located in the eastern region of India. And government has allotted nearly 13 acres of land in South 24 Parganas district of to Jubilant for this purpose. And we have a buy rating on Jubilant and target price is 761. So lastly, and one couple of more updates to go. First on media. So Information and Broadcast Ministry has announced that it is working towards rolling out a pan India single window clearance for theaters. So what has happened is that in the last between 2017 to 2020, number of theaters have come down from 12,000 to 8,000, while during the same period in China it has gone up from 10,000 to 70,000. So government wants more and more theaters to come in. So post the implementation of this policy, government expects that there will be more and more number of theaters that will come out, and this is positive for PVR and Inox, who have plans to add 2,000 screen in the next few years, and we currently have a buy rating for PVR with a target price of 2215. Then lastly on Route Mobile. So Route Mobile has revised its revenue guidance upwards. So earlier it was saying that we will grow our sales by 50%. Now it is saying that it will grow by 60%. So this is positive, and it translated to almost 51% CAGR growth over FY21 to 23. And the company is stating that the reason is that they are seeing very strong demand in Q2, which has led to significant deal wins. So, and it expects Q2 to be best performing quarter, and then on top of that, Q3 should likely to be even better. So, company expect to double its transaction volume in current financial year from 52 billion last year. So this year they might do 104 billion in FY23. On the margin front, the company does not see any major impact despite competitive intensity. So we don't have a coverage on the stock, but this is news is positive for Route Mobile. So that's it from me. Over to you, the retail team.